आज की डेट में अगर मेरे पास 9,86,000 करोड़ है तो मैं पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीद सकता हूँ। मेरी औकात कितनी है आज की डेट में। अब देखो कोविड के बाद क्या हुआ है। पहले होता था कि मुझे कमाना है, अपनी 7 पुश्तों के लिए अर्न करना है, ऐसे वाला फीलिंग था। लेकिन पोस्ट कोविड अपने को 7 पुश्तों का पता नहीं, अपने को तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला माइंडसेट है। I mean, answer this to yourself. Most of the people, they do not want their children to come into their own business. HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने क्विट कर दिया था because he said that practices are not in congruence with my ethics. ठीक है, पहली चीज माइंड में आती है कि यार HDFC बैंक ने कुछ तो खराब किया है। तो अगर मैं RBL की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूं, ध्यान से देखिए, ये 2025 सितंबर, ये 2025 दिसंबर का डेटा है मेरे पास। What I observe over here is, if you see over here for State Bank of India, the net NPA percentage, which was 0.67% in 2023, it has reduced to 0.39%. That means the numbers have become better. पहले अगर मैंने 100 रुपया दिया था, उसके अगेंस्ट मेरा 0.67% शायद बैड डेट हो सकता था। अभी वो नंबर सिर्फ 0.39% का है। सो इन ए वे वो मेरा नंबर्स बेटर हुए हैं, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बेटर हुई है। Hello friends, this is Himanshu Jain. This is a content-based video from the Wall Street School as to how to analyze banks and financial institutions. Because banks are one of the most misunderstood sectors when it comes to valuations and analysis. And if you're preparing for CFA or FRM or heading into investment banking or just wanting to be smarter investors, understanding how to read a bank's financials is absolutely non-negotiable. So today we're going to break it down. The key metrics, the ratios, and the framework professionals use to analyze banks and financial institutions. Okay, so let's get started and stay till the end so that you get a full framework and understand how to analyze the banks for the rest of your life. Okay, so when it comes to the banks, I go to this website called screener.in, create a free account over here. It's a free account. Okay, and it has data of all the banks in India. For example, if I want to look into HDFC Bank, I go to this data of HDFC Bank here. Over here, the main parameter for banks, 3 things I need to look into. One is the revenues. Second is my profit before tax, my net profits. And next thing is my net NPA. What is NPA? My non-performing asset. Okay, because that is perhaps the most critical analysis while looking into the financial health of any bank. That means that in case I have given 100 rupees as loans, then how much money is actually, a non-performing asset. That means that money might be siphoned off, or it might be a bad debt for the company. Okay, so let's look into any bank here, and specifically when you look into the banks, look into the standalone numbers and not the consolidated numbers, because standalone numbers will by default give you the net NPA percentage in percentage terms over here. Okay, similarly if I look into any of the peers, say ICICI Bank, I go to ICICI Bank here and I look into the net profits, I look into the profit before tax, I look into the revenues, and predominantly if I go to view standalone, I'm able to look into the net NPA percentage of an ICICI bank. Okay, so similarly I can do it for private sector banks also and public sector banks also. I can have all the analysis over here. Suppose I want to look into State Bank of India, I go to State Bank of India and I look into the quarterly numbers. I have the revenues, I have the financing profits, I have the profit before tax, I have the net profits over here. Okay, and specifically I need to look into the standalone data and not the consolidated ones, because standalone data will give me the actual net NPA percentage. Now if you see over here for State Bank of India, the net NPA percentage, which was 0.67% in 2023, it has reduced to 0.39%. That means the numbers have become better. पहले अगर मैंने 100 रुपया दिया था, उसके अगेंस्ट मेरा 0.67% शायद बैड डेट हो सकता था। अभी वो नंबर सिर्फ 0.39% का है। सो इन ए वे वो मेरा नंबर्स बेटर हुए हैं, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बेटर हुई है। ओके, सो व्हाट आई डिड ओवर हियर वाज, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, मैंने यहाँ पे आई बोथ द public sector and the private sector, the quarterly numbers. And what I observe over here is, if we talk of HDFC Bank,
HDFC Bank in the last quarters, last 10, 12 quarters, March 23, June 23, September, you see the revenues have gone up. ICICI Bank, the revenues have gone up from 31,000 to 43,000 crores. Axis Bank, revenues grown from 23,000 to 32,000. Kotak Mahindra Bank, from almost 9,000 to almost 13,000 crores. Revenues are going up for every single bank. Revenues are going up for every single bank. You talk of the nationalized banks. State Bank of India, the revenues have gone up from 86,000 crores to 1,22,000 crores. Bank of India, 23,000 crores to 31,000 crores. Similarly, Union Bank of India. I mean, the revenues are going up, every single bank. So in a way, the bank's financial health has become better in terms of the revenues. If I talk of the net profits of all the banks, HDFC Bank net profits have gone up from 12,000 to 19,000. ICICI Bank 9,000 to 13,000. Axis Bank, it was in the red, it has become positive. Federal Bank from 804 to 1,041, it has become positive. Net profits, State Bank of India 14,000 to 21,000, 3,800 to 5,000. For Indian Overseas Bank 555 to almost 1,365. So the financial health of the companies have become better, over the last 3-4 years. Okay, so it's a sign of positivity that the banking and the financial institutions are doing good, right? And more significantly, if I look into the net NPA percentage for an HDFC bank, net NPA percentage means that for every 100 rupees of loan that you have given, how much of money is tentatively or probabilistically be a bad debt? That number is from 0.27% to 0.38%. For ICICI Bank, 0.48% to 0.33%. For Axis Bank, 0.39% to 0.37%. For Kotak Mahindra Bank, 0.43 to 0.31. So it has become better for almost every bank, barring slightly for HDFC Bank, from 0.27 to 0.38, even though it is on a reasonable level. Okay, then if I talk of the net NPA percentage for State Bank or Bank of India or Union Bank or Punjab National Bank, you see, State Bank of India, NPA percentage has become much better, 0.77 to 0.39 only, 0.99 to 0.57, 1.7 to 0.48, 3.3 to 0.32. I mean, see the drastic improvement in Punjab National Banks in terms of its net NPA percentage. For every 100 rupees of loan which it had given, it had 3.3% as the money which might become bad debt. That number has fallen down to 0.32%. Essentially meaning the company has, very significantly improved its lending terms and, made internal controls more robust. Canara Bank, 1.96 to 0.45. Indian Overseas Bank, 1 to 0.15, and that's it. So that is a considerable improvement from nationalized banks as compared to the private sector banks. I mean, they have considerably improved their net NPA percentage, which is a very good sign. Okay, and if I look into the revenues of the HDFC Bank and the ICICI banks and the State Banks of India, also comparing it with the market capitalization, for a HDFC Bank, for a company growing at a 20% CAGR, having 3 lakh crores of revenues, it has a market capitalization of 11,88,000 crores. State Bank of India, having more revenues, 4,62,000 crores, having 13% CAGR, having a market capitalization of 9,86,000 crores. What is the market capitalization? The worth of the company today. कि आज की डेट में अगर मेरे पास 9,86,000 करोड़ है तो मैं पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीद सकता हूं. मेरी औकात कितनी है आज की डेट में. Similarly, if I talk of Bank of India, on a 12% CAGR, मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,36,000 करोड़ का है. Similarly, for Punjab National Bank, अब देखिए ध्यान से, how do you actually analyze the banks? Punjab National Bank, my revenues in the last year was 1,21,000 crores, growing at an annualized CAGR of 11%, having a market capitalization of 1,25,000 crores, as compared to, say, a Kotak Mahindra Bank. A Kotak Mahindra Bank has what? 52,000 crores of revenues last year, having a market capitalization of 3,81,000 crores. Punjab National Bank, 1,21,000 crores of revenues, a market capitalization of 1,25,000 crores, much lesser than that. You talk of profits. A Kotak Mahindra Bank earned 16,450 crores of profits,
having a market capitalization of 3,81,000 crores as compared to a Punjab National Bank. Almost 16,630 crores of profits with a market capitalization of 1,25,000 crores. So over here, the market capitalization of a Punjab National Bank, when it is earning almost very similar profits and much more revenues than a Kotak Mahindra Bank, is almost 1/3 of the market capitalization of a Kotak Mahindra Bank, which is a private bank. Okay, and what we saw in the last slide was that a Punjab National Bank has considerably improved its books of accounts because the NPA percentage has fallen from 3.3% to 0.32% only. Okay, and that's how you analyze the banks, and you see the improvements which are happening. Similarly, what I can make out from these slides over here is that the nationalized banks have significantly bettered its financial numbers, significantly bettered its internal controls. Henceforth, that is reflected in better NPA percentages, because the NPA percentages for the nationalized banks have fallen down drastically. An Indian Overseas Bank, 2.43% NPA, that number is just 0.24% as compared to the private sector banks. I mean, private sector banks are almost even Stevens, but we always associate all those scams or all those things with mostly the nationalist banks. But what you see over here is that they have considerably improved their books of accounts. That is where the value unlocking might be possible. And when we analyze the banks, let's also look into it holistically along with how the economy is growing. So what we see is, in terms of the public sector capex and the private sector capex, what does the data say? In terms of the private sector capex, capital expenditure, because capital expenditure is mostly done by the banks, funded by the banks. Okay, from 2021 till 2025-26, the private sector capex has been 3.95 trillion to 4.89 trillion, whereas the public sector capex, it has grown from 5.9 trillion to almost 11.1 trillion. Okay, so what I observe over here is a striking fact. From 2021-22 till 2025-26, this is actual government data, taken from the union budget releases and coverage in the press. The public sector capex is much more than the private sector capex. अब देखो कोविड के बाद क्या हुआ है, पहले होता था कि मुझे कमाना है, अपनी 7 पुश्तों के लिए अर्न करना है, ऐसे वाला फीलिंग था. लेकिन पोस्ट कोविड अपने को 7 पुश्तों का पता नहीं, अपने को तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला माइंडसेट है. I mean, answer this to yourself. Most of the people, they do not want their children to come into their own business. वो कहते हैं कि जितना है हमारे पास ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, हम इसमें अच्छा अपना गुजारा कर लेंगे, हमारा रोटी पानी अच्छा से चल रहा है, लेकिन तो अपना करियर खुद से बना. They are not wanting the next generation to come, barring a few big houses, ठीक है, which are too big. ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप से भी पूछेंगे, अपने इकोसिस्टम में भी देखेंगे, अपने सर्कल में भी देखेंगे, most of the business owners, they do not want the next generation to come, and that is seen in the numbers. अब पब्लिक सेक्टर का केपेक्स काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, और ये एक्चुअल डेटा है, और ये थोड़ा सा आई वोंट से अलार्मिंग है, बट ये कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है माइंडसेट चेंजेस के ऊपर. ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, कंपटीशन इतना आ गया है, एआई इतना आ गया है कि कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि मैं शायद एज अ बिजनेस ओनर शायद इतना सर्वाइव ना कर पाऊं, तो मैं अपने बच्चों को क्यों उस बिजनेस के अंदर डालूं. ठीक है, तो इसलिए वो नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए रुक जाते हैं कि रहने देते हैं, ठीक, जितना है ठीक है, अपना खर्चा पानी चल रहा है, अच्छी बात है. ठीक है, तो और अगर थोड़ा सा एनालाइज करूं तो जैसे इंडियन ऑयल ने 31,000 करोड़ का केपेक्स उन्होंने लाइन अप किया था 2025 में, ये एक पीएसयू है. ओएनजीसी ने 36,000 का केपेक्स लाइन अप किया, जो एक पीएसयू है. इतना वो हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने एंड पे. और अगर आप उनका बैलेंस शीट भी देखेंगे, इफ यू लुक इनटू द बैलेंस शीट ऑफ से ओएनजीसी का, अगर आप उनका बैलेंस शीट देखिए आराम से, अब देखिए उनका सेल्स बढ़ रहा है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी अच्छा हो रहा है. और अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे इन टर्म्स ऑफ दी बोरोइंग्स, उनका बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 3.5 गुना हुआ, 3.5 टाइम्स. ये बोरो कहां से करेंगे?
ये नेशनलाइज्ड बैंक से बोरो करेंगे, ये आईसीआईसीआई बैंक से, एक्सिस बैंक से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से नहीं बोरो करेंगे। सिमिलरली आप देखिए इनकी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फिक्स एसेट्स में ग्रो कर रहा है, और फिक्स एसेट्स ग्रो कर रहे हैं तो आपका बोरोइंग भी बढ़ रहा है। तो you are making investments in the fixed assets to grow the business. Then we have seen in the data कि वो they are going for major capital expenditure. Similarly, if I talk of say Indian Oil Corporation, अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, यहां पे भी आपको ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ डेटा दिखेगा। आपका सेल्स बढ़ रहा है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, आपकी बोरोइंग्स जो है, आपकी जो बोरोइंग्स है वो काफी बड़ी है, मतलब 64,000 से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गई, 1,32,000 करोड़ हो गई इन द लास्ट 10 years, राइट। आपके फिक्स एसेट्स अभी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए। तो अगर बोरोइंग्स कर रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, वो पैसा कहां से आ रहा है? फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक्स। फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स ही तो फंड कर रहे हैं ना। आई मीन एन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज नॉट गोइंग टू गो टू कोटक महिंद्रा बैंक कि भैया मुझे पैसे दे दो एक्सपेंशन के लिए। they're going to go to a nationalized bank, a State Bank of India, or a Canara Bank, or a Punjab National Bank. Okay, तो कहीं ना, and we have seen the data that they have significantly improved their books of accounts, and because they have improved their books of accounts, तो कहीं ना कहीं पर probability of better returns for the public sector banks is much higher as compared to the private sector banks. आप देखिए, मतलब सामने सामने डेटा है आपके पास। एक कोटक महिंद्रा बैंक है जिसकी आप रेवेन्यू 52,000 करोड़ के थे, जिसका नेट प्रॉफिट्स, जिसके रेवेन्यू 52,000 करोड़ के थे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,81,000 करोड़ का है, एज कंपेयर टू पंजाब नेशनल बैंक जिसका रेवेन्यू 1,21,000 करोड़ है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,25,000 करोड़ है। एंड दोनों ही बैंक्स ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट्स ही अर्न करते हैं। वो भी 16,000 करोड़ अर्न कर रहा है, वो भी 16,000 करोड़ अर्न कर रहा है। और नॉर्मली मार्केट कैपिटलाइजेशन हम फ्यूचरिस्टिक देखते हैं, लेकिन हमने फ्यूचरिस्टिकली देखा कि कितना ज्यादा केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है पब्लिक सेक्टर का एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। बारिंग द फ्यू प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स in terms of capital expansion is having in public sector enterprises, as we saw the data for. तो the potential of returns किसमें ज्यादा है? I leave it to your wisdom and to your judgment. इस तरह से किसी तरह से बैंक्स को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से प्रोफेशनली किसी चीज को एनालाइज किया जाता है, और उसके बेसिस पर एक अपना जजमेंट और एक अपना विजडम बनाते हैं। ठीक है, हम जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा कॉम्प्रीहेंड करेंगे, उतना ज्यादा उसके अंदर जाएंगे, और एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जब हम अपने कन्विक्शन से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मार्च 2026 में एक न्यूज आया था, हम सब ने देखा था कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने क्विट कर दिया था बिकॉज ही सेड दैट प्रैक्टिसेस आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माय एथिक्स। ठीक है, पहली चीज माइंड में आती है कि यार एचडीएफसी बैंक ने कुछ तो खराब किया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है कंपनी के अंदर, मे बी उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, मे बी वो शायद लोन मतलब कुछ अपनी कमीशन रखकर लोन दे रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर ऐसा है, और अगर एक मैं सेवी इन्वेस्टर हूं, और अगर मैं एचडीएफसी बैंक की तरफ देखूं ध्यान से, यहां पे ये न्यूज, ये सिंस जनवरी 2026 ये आपका प्राइस 1,000 रुपए था, जो आज की डेट में 774 रुपीज का है। और मार्च के बाद तो ये बहुत ही खराब हुआ जब से वो न्यूज आई थी, जब से मिस्टर चक्रवर्ती की न्यूज आई थी। बट अगर मैं एक सेवी इन्वेस्टर हूं, अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं इस कंपनी के, तो मैं क्या समझूं? In terms of revenues, the highest ever revenues earned by the company in its history. In terms of its net profits, the highest ever net profits earned by HDFC Bank in its history. और मैंने आपको सिखाया था स्टैंडअलोन बेसिस पे देखना है। You look into the net NPA percentage. आपका NPA percentage दिसंबर के बाद बेटर हुआ है, खराब नहीं हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने शायद लोन बुक्स भी आपकी एकदम ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन है, इंटरनल कंट्रोल्स रोबस्ट है, तो उसके पीछे कुछ और रीजन होगा। और स्टॉक प्राइस हैज फॉलन डाउन बाय मोर देन 25-30%। और एक और एग्जांपल देता हूं, अभी न्यूज आया था जनवरी 2026 में कि आरबीएल बैंक नेट प्रॉफिट राइजेस 5.5x टू 214 करोड़, एसेट क्वालिटी इंप्रूव्स, नेट इनकम इंटरेस्ट income grows by 5%.
ये 2026 का न्यूज है। अगर मैं आरबीएल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूं, ध्यान से देखिए, ये 2025 सितंबर, ये 2025 दिसंबर का डेटा है मेरे पास। व्हाट आई ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि नेट प्रॉफिट जो है दे लुक लार्जली इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ लोअर प्रोविजंस। आपके प्रोविजंस पहले इतने थे, अब इतने रह गए हैं, इसलिए जो आपका नेट प्रॉफिट इतना था वो अब इतना हो गया है। ठीक है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज हैड ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ईयर ऑन ईयर इंपैक्ट। आप यहां पे देखेंगे कि दिस रिडक्शन इन नॉन कोर ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ मैग्नीफाइड द रिपोर्टिंग ऑपरेटर्स। आपका मेन फर्क पड़ा, आपने प्रोविजंस को रिड्यूस कर दिया था, लेकिन न्यूज आया कि माय नेट प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 5.5x। तो ये नॉइस है, दिस इज नॉइस। अपने को इस नॉइस से बचना है। ठीक है, यस प्रॉफिट जंप्ड, लेकिन जो जंप था वो ऑप्टिकल था, वो स्ट्रक्चरल जंप नहीं था। ऑर्गेनिकली कंपनी ने इतना पैसा नहीं कमाया था, वो सिर्फ एक हेडलाइन थी। जंप वॉज ऑप्टिकल नॉट स्ट्रक्चरल। तो अपने को बिना मतलब कि उसके अंदर नहीं जाना, मतलब सिर्फ न्यूज हेडलाइन बेसिस पर रिएक्शन नहीं देना है, अपने को नंबर्स को सही से समझना है और उसी तरह से उसको परखना है। ठीक है, आई होप इट वाज सम लर्निंग फॉर यू। Keep learning, keep investing in yourself and become a better version of yourself. And if you like this video, please share it with your friends and your colleagues, and do put that in the comment as to which more sectors you would want us to analyze. Thank you for watching till the end.